Good morning. Hi, good morning. Good morning, good morning. Wow, everybody is looking so fresh. So कल आपका पापा का बर्थडे कैसा रहा? Yes, Sakshi. It was really nice. It was great. Great, perfect. So wish him long, long, long and healthy Are, life. thank you so much. Thank you. Yes, जी. And कल कैसा रहा? How was the day? It was good. What did you do? How did you use the exercise and did it materialize for you or not? I also did it the same way. I didn't visualize. I made it on a piece of a paper with the help of a pencil, and then I wrote it the way you were telling me, and I just kept it right now. Like in the book, it's written, and it's there. Like, let's see. Okay. So keep it somewhere where you can see it. Okay, all right, Hmm. all right. और कुछ किया कल किसी ने? Anything which materialized? Yes, Tanvi. मैंने जो अपना किया था तीनों टू डू लिस्ट वाला पर्टिकुलरली सारे मेरे वर्क से रिलेटेड थे एंड अबाउट हाउ जहाँ जहाँ पे मटके में ना अपने आप हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज 5 दिन बाकी है अभी डेडलाइन का. सो अपने आप हो जाएगा. सो व्हाट आई नोटिस्ड कि ओवर द डे जब भी हम अटक रहे थे ना, समहाउ दैट वाज ऑलवेज कमिंग बैक टू मी कि नहीं, तुम थोड़ी देर अभी 10 मिनट टीवी देख लो, काम तो हो जाएगा. ये टेंशन में फिर जम जाते हैं ना वैसा. नहीं नहीं ठीक है, सब ठीक हो जाएगा. I like that. तुम टीवी देख लो, काम अपने आप हो जाएगा. हाँ, एंड देन हो भी गया एंड एटीट्यूड चेंज हो गया व्हिच वाज वेरी रिलैक्सिंग. Exactly. तो ना टेंशन करके कुछ होता नहीं है. And see बात, when I was doing this book for the first time ना, so our mentor जो हमें बुक करा रही थी, she used to say अगर दोनों चीजें नहीं मैनेज हो रही है ना, तो थोड़े दिन काम छोड़ दो. राइट तो जिस दिन मेरे से ये सब नहीं होता, कुछ कुछ और होता है ना, तो पहले क्या होता था, मैं काम को प्रायोरिटी देती थी, कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती थी. अब मैं क्या है ना, काम को रिस्केड्यूल कर देती हूँ. एंड उससे होता क्या है, कोई मेरा काम नहीं रुकता, कुछ नहीं होता, उतना ही काम है, पूरा दिन खिंचता नहीं है, फट 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 हो जाता है. एंड but that mindset has gone away that I can postpone this activity for tomorrow. And that is very, very critical. And now my brain automatically goes into brighter side of everything mode. मतलब कुछ भी हो जाए, चाहे दिमाग immediately be like but on the other hand, and then mood change हो जाता है तुरंत. Right. नहीं तो this is amazing, very very nice. So let's see आज का क्या चैप्टर है. Good morning Namrita. Good morning, ma'am. How is the little one? He is quite injured, ma'am. Better है. इसका चेहरे पे काफी चोट लगा है. Okay, पर अब ठीक है ना? हाँ देखिए बदमाशी कर रहा है. चेहरे से देखेंगे तो मतलब... समझ में आएगा. या बदमाशी कर रहा है तो वो ठीक है. अब आप लोग ठीक हो कि नहीं, ये तो आप लोग हम लोग ठीक नहीं है, खिलाने की कोशिश करते हैं इसको. राइट ये ना, मैंने देखा कम से कम मैं सुन लूंगी आज. ज्वाइन नहीं भी कर ज्यादा पाऊंगी तो जस्ट लिसन. बिल्कुल, वेरी वेरी नाइस. तो चलो जी, लेट्स सी आज का हमारा दिन क्या कहता है. So who will read today? Riyan, take water. Riyan. हाँ, नम्रता अपने आप को म्यूट कर लो बस. Oh sorry ma'am, म्यूट नहीं हुआ. Right. So we are going to read this chapter, Magic Footsteps, today. कौन पढ़ेगा? So from Sakshi and Chitra, one of you can actually. I will read. Okay, Sakshi. Yes, Sakshi. Can you see the book? Yes, I can see the book. Great. So. Yeah. Can I start? Yes. Magic Footsteps. Magic Footsteps. 100 times every day, I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving.
Albert Einstein. With those Wow, words. so it is so important. Just a minute. Okay. So हमारी लाइफ डिपेंड करती है और लोग क्या काम कर रहे हैं, yes or no? Right? And Albert Einstein says that that's the reason that we must exert ourselves so that हम भी उतनी ही डिग्री में लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाए जितना वो हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. And it is not about contributing in the same people's lives, but it is contributing in someone's life. Right? तो मुझे नहीं पता आज तक whether we think like this or not, but it is very, very important. And जैसे ही हम ऐसा सोचने लग जाते हैं ना, तो दो चीजें जरूर होती है. एक, हमें अपना काम और अच्छा लगने लग जाता है बिकॉज अब हमें पता है कि वो कहीं वैल्यू ऐड कर रहा है. मैं बहुत से लोगों को मिलती हूँ जो कि ना जो भी वो काम कर रहे होते हैं उसमें उनको कोई वैल्यू ही नहीं दिख रही होती. दे आर जस्ट वर्किंग बिकॉज उनको सैलरी मिल रही है. राइट? बट द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि किसी और की लाइफ में इससे वैल्यू ऐड हो रही है, you get a purpose of doing something and you start feeling very, very good. And second क्या होता है, the moment you do like this, आपका काम में आपको इतना मजा आने लगता है कि आपका काम अपने आप ही बढ़ जाता है और आप इतने बढ़िया हो जाते हो अपने काम में that you just keep on improving without putting that much amount of work. मैं नहीं कह रही without putting any hard work, but उतना ज्यादा काम नहीं करना पड़ता to reach that space जितना कि आपको तब करना पड़ेगा अगर आप इस बिलीफ से काम नहीं करोगे. तो दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड दे आर सो डीप कि अगर आप इसको सोचोगे आज दिन भर में तो यू विल गेट टू हैव अ वेरी न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट थिंग्स. स्पेशली जैसे हम लोग घर में काम करते हैं या कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें पेमेंट्स नहीं होती बट वी जस्ट डू इट. बहुत कम होता है कि हम उसमें वैल्यू समझ पाए कि यार हो क्या रही है. हम जनरली अपने आप को अंडरमीन कर रहे होते हैं एंड दैट्स नॉट द राइट वे. यस साक्षी. Yes, ma'am. Oh, okay. All right, start. With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success: gratitude every day. Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? William A. Ward. So beautiful, na? Yeah. Okay. Yes. To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic word thank you as your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot thank you, next foot thank you, and continue saying the magic words with every footstep. The best thing about magic footsteps is that ऐसा लग रहा है ना आज गेम खेलनी होगी पूरा दिन. Yes, that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time, through your house, from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job interview, an audition, to meet a client,
to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car. Just a minute. Just a minute. I am just wanting to check कि हमारा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना? हो रहा है. ओके, प्लीज चेक कर लिया करो, कल का ना सेशन नहीं रिकॉर्ड हुआ. I think it's yes, perfect. ठीक है, perfect. I can't see it here ना because screen share हो रही होती है. Yes, sorry, Sakshi. Yeah. All right. I take magic foot. Yeah, I've done this now. Right. Whenever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination, and I put gratitude in my footsteps all the way. If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterwards. If you are feeling down, magic footstep will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. Shall I continue? Yes. To take the most effective magic steps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. Wow. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Now, this is very important to know. Note कि आपको ये नहीं करना है कि 100 तक गिनी जा रहे हो and you know you've done with it and you're very happy, exercise हो गई है. Okay. आपको मॉनिटर क्या करना है, क्या the way you feel change हुआ है कि नहीं हुआ. Okay. 90 seconds में 100 footsteps में आप 100 बार थैंक यू बोलोगे. अब वो थैंक यू अगर आपने फीलिंग के साथ बोला, you will start feeling different definitely. But अगर आपने वो फीलिंग के साथ नहीं बोला, you just keep saying thank you, 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 and अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है कि किस चीज के लिए थैंक यू हो रहा है, you will not feel different at the end of those 90 seconds. So feeling is very, very critical when we do this exercise. Yes, Sakshi. Okay. Once you are clear on the approximate distance you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice, because you will be counting instead of saying thank you, the magic words with each step. When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words, thank you, 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. So beautiful. So what she is trying to tell us in this chapter is कि भाई साहब इतने दिनों से आप ग्रेटिट्यूड की जर्नी में हो, हैं कि नहीं है? है ना? आपने क्या कभी 100 टाइम्स थैंक यू बोला है किसी भी दिन? Right? And of course, she says that, Einstein did it every day. And I think every successful person would be using the power of gratitude to become successful and to be happy and to help others and to contribute in people's lives. So this is amazing. So आज ना हम एक next level of gratitude पे पहुंच जाएंगे. And the beauty is it doesn't need the whole day. आज शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लगे, बट जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, it will just be requiring 90 seconds of your day.
right? Yes. Magic practice. Okay, magic practice number 19. Magic footsteps. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you. Thank you, thank you, and wait. And feel as grateful for that blessing as you can. Take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude in any time during the day. With each footstep, say and feel the magic words thank you. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Wow. Thank you, Sakshi, for reading such a beautiful chapter for all of us. Thank you. Thank you, ma'am. Perfect. So anybody who has any questions about this exercise? Not about this exercise, but generally every day I've been doing not this but similar things. So जब हमारा जो first वाला part होता है ना कि 10 blessing लिखो उसके बाद फिर read करके thank you बोलो. So usually ना what I do is मैं 10 मिनट लगता है बैठ के लिखती हूँ, उसके बाद around 45 minutes to 1 hour अपने हॉल में आगे पीछे वॉक करते करते एक एक ब्लेसिंग के बारे में सोच के थैंक यू करते हैं. तो वेरी सिमिलर टू जो अपना फ्यूचर में जो चाहिए उसको अभी का मान के करो, वैसा टाइप का I've been investing in it, and I think that is also why it is now I feel like becoming very natural. So I would suggest that for everybody if you ever want to try. The more you get into it, वो ये ना जितनी चीनी डालोगे मीठा तो उतना ही होगा. सिर्फ लिखते उठ जाओगे तो उतना ही होगा. लिखकर पढ़ोगे और थैंक यू बोलोगे तो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाओगे. उसको अगर 10-10 बार थैंक यू बोलोगे, हर चीज को विजुअलाइज भी करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज करोगे, और ज्यादा जल्दी पहुंच जाओगे. सो ये तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी जल्दी लाइफ में कैसे लिव करना है. परफेक्ट है जी. Tanya ji, so this is a very beautiful exercise. आज गेम की तरह इसको करना, ठीक है? And so let's end this session with our beautiful lines. मुझे तो ये लाइन्स ही बड़ी empowering लगती है. मैं पूरा दिन imagine करती रहती हूँ that light is coming out from my, heart, and I am like glowing in it and shining, and bas, matlab. So the whole day I keep shining, and I'm sure all of you feel the same. Yes. This little light of mine. This little light of mine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. This little light of mine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. This little light of mine, let it shine, let it shine, let it shine. Thank you, everybody, and happy 100 steps today. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bye-bye, and wishing speedy recovery to your grandson. Thank you, ma'am. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye.